All right, now let's move on. Let's move on to the next question, the last one. That's question number 7. This is all that we were looking for here, right? Yeah. Question number 7. Now it says the diagram shows two particles P and Q which lie on a line of greater slope of a plane ABC. Particles P and Q are each of mass m kilograms. P and Q both have mass m kilograms. The plane is inclined at an angle of theta. You can see it in the diagram. Sine theta is 0.6. Length of AB is 0.75. It's there in the diagram. BC length is given. AB part of the plane is smooth and BC is rough. The coefficient of friction between the particle and between each particle in the section BC is 0.25. That's the coefficient of friction. Particle is P is released from rest. So it's at rest at P. It's released from rest. At the same instant, particle Q is released from rest at D. So particle Q starts at rest from this point. Q is also released from rest. Verify that particle P reaches D 0.5 seconds after it is released with speed 3 meters per second. This is point B. Now, how do you find its? So we have to basically prove both things: time taken and its final speed. Okay. Now, what do we know about this journey? Starting point is 0. Starting point is A. It starts at a speed of 0. It's moving downward, so we consider downward direction as positive. AB part is smooth. Okay. Now, what do we know about AB part? Initial velocity is 0. Displacement is 0.75. What about acceleration? Can we say anything about acceleration? It's a smooth plane. Since it is a smooth plane and weight is the only force acting on the particle, it's a smooth plane, weight is the only force. What does that tell us? The acceleration value is 10 sine theta, right? Whenever it's a smooth surface and weight is the only force acting, acceleration is given by 10 sine theta. Now, since we are taking downward direction as positive, its acceleration is also going to be positive. What does the value of acceleration turn out to be here? 10 into sine theta, we know that sine theta is 0.6. So the value of acceleration is 6. Okay? Acceleration is 6. Why? Because it was a smooth surface and weight was the only force acting. Now we have to find the time taken and the final speed. How do we do that? For time, we could use S equals ut plus half at square. But that will be a quadratic equation. Let's find V first, the final speed. We can use this equation for that. V squared minus u squared equals 2as. Let's input values in this. V squared minus 0 squared equals 2 into 6 into 0.75. You can see what the value of V turns out to be from this. 12 into 0.75, square root of that, that's 3. V is 3 meters per second. Now that we have the value of V as well, it's simpler just to use V equals U plus AT, although there as well, since U was 0 and S equals UT plus half AT square, you could also actually use that. You would not get an equation that's too complicated. But in this case, if we use V equals U plus AT, you get 3 equals 0 plus 6 times T, and the value of T turns out to be 0.5. That's what we had to show. Both of these answers are given. So the marks that you have here, the 3 marks, they're only for working. If you do not show your working clearly and completely, you don't get full marks here. Okay? All right. So whenever it's a smooth surface, remember, we have done this. Whenever it's a smooth surface and weight is the only force acting, acceleration is given by 10 sine theta. Okay? All right, now let's look at part B. It says find the time that it takes from the instant the two particles are released until they collide. Okay, now think about this. Q is also moving downwards. And P is also moving downwards. They start at the same instant. So their starting instant is the same. So their times are going to be the same, right?
At some point, P is going to catch up with Q. Let's say that's here. We need to find the time taken until this point. Now we don't know where that point is. It could be here, it could be here, it could be here. It's anywhere here. Do we know that? Until they collide? Yeah, so we don't know that. It's at some point below the level of B, okay, where they collide with each other. Now, how do you find the time taken until that point? Let's call this point X. Let's think about both the particles one by one. So what do we know about particle A and what do we know about particle B? A starts, both of them start at 0. So their initial velocities of both of them are 0. What about acceleration of P? So acceleration of P is actually going to be different in the first part and then different in the second part. So what we can actually do is we will have to break it down into two parts, because until Q it's different and after that it is different. Okay, so we'll have to break it down. We already have some information from the first part. We know that in 0.5 seconds, P has actually reached this point, right? It took P 0.5 seconds to reach this point. And at this point, we know the velocity of P is 3 meters per second. After 0.5 seconds, particle P has reached here. Let's start from that point. Let's also figure out how much has B traveled, how much has Q traveled, in 0.5 seconds. In those 0.5 seconds, where has Q reached? Let's figure that out first, right? Because we already know in 0.5 seconds, P has reached the point B. How much has Q traveled in those 0.5 seconds? Let's figure that out. What do we know about particle Q? Particle Q is also moving down the plane. We know initial velocity is 0. And that's all that we know about this. Yeah, C is something that we're going to be using later. So for this, we only know initial velocity. We know some forces. Let's use forces to find acceleration. What do we know about the acceleration of Q? How can you find that? What are the forces acting on Q? What's the weight of Q? Weight of Q is going to be 10 times m, right? Weight is 10 times m. What other forces do we have? We've got friction because the plane is rough. From B to C, the plane is rough. There's going to be friction that acts in this direction. And these are the only two forces acting. Along the surface, there's going to be reaction that acts in this direction. Let's resolve the forces. If this angle is theta, this angle is also going to be theta. Then what about the components that we get? This is going to be 10 m into cos of theta. And the other component is going to be 10 m into sine of theta. Using this, we can find the acceleration of both the particles from Q onward, right? Because they're on the same surface, their masses are also the same. So the forces acting on both particles in this region, they are the same. So they will be moving at same acceleration in BC part. We are looking for that acceleration. Now, what are the forces that are acting? The forward force is 10 m sine theta. The backward force is F. Reaction is going to be equal to 10 m cos theta. Now let's use that here. Forward force is 10 m sine theta. 10 m sine theta minus the backward force, which is friction, equals mass, which is m into acceleration. Okay. Now we know the value of sine theta. Sine theta is 0.6. We can put that here. They gave us in the question.
minus F. What is F? F is equal to mu r because the particles are moving. Friction is going to be at its maximum value. That's mu times r. Mu into r. That equals m into a. Now 0.6 into 10, that is 6. So we have 6 times m minus mu. What's the value of mu that we have? They have given that in the question. That's 0.25. Let's put that here. Minus 0.25 into reaction. What is reaction going to be? These forces are equal. Forces acting perpendicular to the surface. They're supposed to be equal to each other. So we get R equal to 10m cos theta. Okay, R equals 10m cos theta. Now, do we have the value for cos theta? We don't. We have the value for sine theta. We don't want an exact answer as such. We can just take sine inverse of that and then find cos of that. Let me just do that quickly. Sine inverse of 0.6. That's going to give me the angle. Then take cos of that. And that's going to give you 0.8. So cos theta, if sine theta is 0.6, you can find the corresponding cos theta value that's turning out to be 0.8. Okay, just put that here. That gives you 10m into 0.8. That is 8 times m. So R is equal to 8 times m. Let's put that here. 8 into m, that equals m into a. And that simplifies to 6m minus 8 into 0.25, that is 2m equals m times a. 4m equals m times a, and the value of acceleration turns out to be 4. From B to C part of this plane, the acceleration is equal to 4 meters per second square. Okay, we have found the acceleration for this part of the journey. Now, let's see how much has B already traveled. So now we are starting our journey. So now that we've talked about forces, I'm going to get rid of these forces from here. We don't need them anymore. Now let's talk about the information that we have related to kinematics. At point B, the speed of P is 3 meters per second. Where is Q at this instant? Let's figure that out first. So in the first 0.5 seconds, let's figure out where is Q going to reach, right? Because we already know that in 0.5 seconds, particle P has reached the point B. Particle P has reached here. How much has Q traveled in this time? Let's figure that out. In the first 5 seconds, we know the initial velocity is 0. We know the acceleration value now is 4, and it's moving down the plane. And we know that the time taken is 0.5. How much has Q traveled in this part? And also, what's the final speed of Q after this point? Let's figure both of those things out. So we want to find the value of S and also the value of V from this, the speed of Q at that point. Let's figure this out. V equals U plus AT. We can use that to find the final velocity. Let's see what that turns out to be. After 0.5 seconds, the velocity of Q, so we're talking about Q here, right? Particle Q. V equals 0 plus 4 times 0.5. So after 0.5 seconds, this is the velocity of the particle Q. And how much distance has it traveled? S equals ut plus half at square. Yeah, we can use that. Let's see what we get from that. S equals 0 into 0.5 plus 1 over 2 into A, which is 4 into 0.5 squared. What do we get from this? How much distance has it traveled? 2 into 0.5 squared, that is 0.5. So it has traveled 0.5 meters
in these 0.5 seconds. This is the state after 0.5 seconds. Okay. Now let's move on. After 0.5 seconds, this is the state now. Let me represent that here. P is here, and its speed is 3 meters per second. Q is ahead. Let's say it's here. Just to present that right here. Q is ahead. It is moving at a speed of 2 meters per second. What's the distance between them at this point? 0.5 meters. This is their distance from each other, 0.5 meters. Okay. Now they keep moving forward. P is moving down the plane, Q is moving down the plane. At some point, they collide with each other. Let's say this point is X. What's the total distance traveled by P until this point? We can call that SP. So let's actually mark this at this point. This point is B, where they're starting from. And they are colliding at the point X now. Okay. Now, P is starting from B, by the way. Q is starting from another point. That's 0.5 meters ahead. Now, let's talk about this part of the journey for the second part of the journey. Let's talk about this point. Now, this is happening a lot in some recent papers. There are some questions that are extremely long. So this for 4 marks is too much working. And you will find that it's a pattern in some recent exams. And it generally happens in kinematics questions, especially when they're connected with momentum. And in this case as well, there is momentum coming in the last part as well. These questions tend to be very long, and you will find this a pattern in some recent papers. So make sure that you don't end up starting a question like this in the middle of the exam, okay? Generally, it's coming towards the end, but if it comes in the middle, make sure if you are running into something that's taking too much time, skip that, do the rest of the questions. Otherwise, threshold is not going to take care of you. Okay, I'm sorry, I should not put it this way to scare you. Do it the other way around. So basically, if you skip this question and do the rest of the questions correctly, threshold will take care of you. So you will find some papers, like I mentioned this in one of our earlier classes as well. I think November 21, some component, paper 4.3 or paper 4.1, that was basically impossible to complete in time. And if you look at the threshold of that paper, that was 28 out of 50 or 29 out of 50 for mechanics. That's the lowest it has ever been, 28 out of 50 for an A. And you would have gotten that if we just skipped that longer question, did the rest of the questions correct, and then got some method marks on that question, you could have gotten something around 40, and that's way above the A mark. That's way above the A star threshold for that as well. So the trick is, if you end up getting a question like this, just don't touch that in the middle of the exam. Do the rest of the paper, and then at the end, depending on how much time you have, get as many method marks as you can on that. Okay. All right. So you can probably find one of the that particular paper in the recordings in the playlist that I've shared in the WhatsApp group description as well. I think that paper took me around 2 hours to complete. Now, of course, this is different because I'm explaining at the same time as well. But even if you're doing it in the exam condition, it was impossible to do in time. So the threshold basically takes care of that. So you don't have to panic. Just make sure that you don't panic and do the easier questions first, and then leave it for the very end, and the threshold will take care of it. Okay, as long as you're not making careless errors on the rest of the questions. Okay, now this looks like one of those parts. These are 4 marks only, and the working is a bit too much for us. Okay. Okay, now let's consider the next part of the journey. What's happening in the next part? In the next part now, initial velocity for P, let's talk about both the particles again. We've got this particle P and we've got this particle Q. Both are moving down the plane still, right? So we're considering down the plane positive. Initial velocity for P
that is 3 now. We know the acceleration. On the rough part, the acceleration for both the particles is same. It's 4 here. And for Q, the initial velocity was 2. Acceleration for this was also 4. Okay, this is the information that we have. There's no other thing that we know about this. We don't know what their velocities are going to be at the point of collision. We don't know how much time they're going to take until collision. We don't know their displacement until collision, right? But now, since the other things are unknown, what we do is we think about what is common between their journeys. Time is common, right? If we start at this instant after 0.5 seconds, their time taken is going to be the same, right? So if we say time taken by P is T, we can say time taken by Q is also T. So we use variables that are common between them. Time is common between them, right? So that we don't have too many unknowns. What else? We know something about displacements as well. Until point X, let's say, if P has traveled SP distance, let's call that SP, Q would have traveled SQ distance until that point. Do we know some connection between SP and Q? SP is more than SQ, right? Because P was behind by 0.5 meters and Q was ahead. So we can say SP equals 0.5 plus SQ, right? Or you can say SP minus 0.5, that equals SQ. So we get an equation from that we can use to find the value of T. Now, let me explain what I mean by that. We make this equation. We say SP minus or equals 0.5 plus SQ, right? Because you see, P was behind, Q was ahead. The displacement of P from this point onward will be 0.5 meters more than the displacement of Q. Okay. This is the equation that we get. Now, let's input values. Which equation connects these things? Ut plus half AT squared, right? We're going to be using that equation, Ut plus half AT squared. Let's see what we get from that. Displacement of P. That's 3 into T plus half into A, which is 4 into T squared, equals 0.5 plus SQ, which is 2 times T plus half into 4 into T squared. And this is going to give you a time value. Now, you see on both sides, this term gets cancelled, right? They're both the same. And this gives you time equal to, because this goes to the other side, it becomes 3T minus 2T, that becomes T, and this time turns out to be 0.5 seconds. So they collide with each other after 0.5 seconds from this point onward. 0.5 seconds had already passed earlier as well. They asked us for the time that it takes from the instant that the two particles are released until they collide. So what's the total time taken? 0.5 seconds had already passed earlier. Then you have 0.5 seconds more passed now. What's the total time taken until the point of collision? That's 0.5 plus 0.5, that is 1 second. So they collide with each other after 1 second of them starting their journey. Is that okay? Make sense? That's part B. Now let's move on to part C. Now it says the particles, so now that they have collided, the two particles coalesce when they collide. The coefficient of friction between the combined particle and the plane is still 0.25. So this is still the coefficient of friction. Find the time that it takes from the instant the particles collide until the combined particle reaches the point C. Okay. Now let's think about this. So now we have reached the point X, right? X is the point where this collision happens. We need to find the speed of that combined particle just after collision, right? How do you find that? We have to find their final velocities, final velocity of P and the final velocity of Q at that point of collision. So let's find that first of all.
So from B to X, what did we know about P and Q, both the particles? We knew that initial velocity for P was 3 and initial velocity for Q was 2. We know their accelerations. We know the time taken now as well. Time taken for both of them is 0.5, 0.5. And what we can do now is we can find their final velocities. And we can also find their displacements. We can find both of those things now. We need both of them, right? Because we need to, what do we need to find out? Time taken until they reach C. Yeah, so we need displacement as well, because we need to find how much distance is this already, and then how much more do they need to reach the point C. So we also need the distance traveled until this point. Let's find both of those things. Let's find their velocities first of all. What are their velocities going to be? V equals U plus 80, we can use that in both of them. V equals U plus 80. Here as well, V equals U plus 80. What do we get? V equals 3 plus 4 times 0.5. That gives us 5 meters per second. That's the velocity of P just before collision happens. And similarly here, V equals 2 plus 4 times 0.5. That is 4 meters per second. That's the velocity of Q just before collision happens. Both of them have the same mass, right? Both of them have mass n kilograms. Their masses are the same. Let's use conservation of momentum to find the velocity just after collision. Let's see what that turns out to be. Momentum before collision, that equals momentum after collision. Okay, so what do we know about before momentum? These are their velocities. Momentum before collision will be m into 5. Both of them are moving down the plane, right? So the directions are the same. Plus momentum of Q, that is m into 4. That equals momentum of the combined particle. What's the total mass? Total mass will be 2 times m into the velocity of that combined particle. Let's call that v. M and m get cancelled, and we have 9 equals 2v. V turns out to be 4.5 meters per second. This is the velocity of combined particle. Okay. Now this combined particle is moving down the plane from this point to the point C. We have to find the time taken after collision until that combined particle reaches the point C. Now, what do we need for this? We know the initial velocity for this now. So from X to C for the combined particle, what information do we have? We know the initial velocity. Initial velocity is 4.5. We can find displacement as well. And we have to find time. What about acceleration? We also have to find acceleration again now. Yes, we'd have to do that because the mass has changed. Okay, so let's find acceleration again as well. What are the forces acting on this particle? I think it should remain the same. Think about this. If it was m before, what has changed now? Let me just look at the calculation that we had here. So in this calculation of acceleration, what would change now? This would get multiplied by 2. The forward force was 10m sine theta. This will become 2 into this. Okay. Mu will remain the same. Reaction will be 2 times that as well. So reaction will also be 2 times this. And on the right side as well, we have 2 times that. Yeah, so acceleration is going to remain the same for this particle as well. You can calculate that again if you want. But since it's just the mass that is changing,
everything in this equation gets multiplied by 2. In that resultant force equals mass into acceleration equation, everything gets multiplied by 2, so acceleration remains the same. Okay, even though mass gets multiplied by 2, this whole equation gets multiplied by 2, the acceleration value at the end is going to be the same. Okay, so acceleration is still the same. We say acceleration is equal to what was that, 4? Yeah, acceleration is 4. This is also known. Now we need to know how much distance they have to travel from X to C. How do you find that distance traveled? That's the question. We can find the distance traveled from by P until this collision happens, SP. How do we find that? We've got that equation here already that we made here. We can use this equation for SP. And that will give us the distance traveled already before that collision happens. Let's find that distance traveled here, SP, and see what that would be. Initial velocity was 3, time taken was 0.5 plus half into A, which is 4, into time, which is 0.5 squared. What do you get for this? Displacement of P. 3 into 0.5, that's 1.5, plus 2 into 0.25. That's giving me 2 meters. So this point X is basically 2 meters. This distance is 2 meters. So what's that remaining distance from X to C? That remaining distance is 1.25 meters. So from X to C, the displacement is 1.25 meters. So now we know that displacement from X to C is 1.25 meters. Why? Because from B to X, it was 2 meters. B to the point of collision, that was 2 meters. This total was 3.25 meters. So we know that from X to C, it's going to be 1.25 meters. And now we can find the time until it reaches the point C. We have to find the value of T from this. Which equation do we use here? And if all of that was not enough, they want us to solve a quadratic equation now. UT plus half AT squared. S is 1.25 in equals 4.5 into T, which is what we have to find out, plus 1/2 into acceleration, that is 4 into time squared. This is what we get, and that gives us 1.25 equals 4.5 times T plus 2T squared. That's a quadratic equation that we get from this. 2T squared plus 4.5T minus 1.25 equal to 0. Since it's mechanics, they expect you to know paper 1 concepts and use them as well. You have to put this in the quadratic formula. Although in this case, most likely they will forgive you for that because it's too much working for 5 marks already. But make it a habit, always input values in quadratic formula and then write down the answers. Minus 4.5 plus minus square root of 4.5 whole squared minus 4 into 2 into minus 1.25 whole divided by 2 into 2, and see what value of T that gives you. To 4.5 minus 1.25. One value of T that I'm getting is 0.25. And the other value is minus 2.5. Now, of course, time cannot be negative. So this is not possible. So after the collision happens, the combined particle takes 0.25 seconds more to reach the point C. That is what we get from this. But let's see what I have to do here. The diagram shows a smooth track which lies in a vertical plane. The section B is a quarter circle of radius 1.8 meters. Okay, so it's a quarter circle. The section BC is a horizontal straight line of 7 meters. OB is perpendicular to BC. Section CF is a straight line. Okay, सब कुछ आपका diagram पे नजर आ रहा है. Particle P of mass 0.5 kg is released from rest at A. Rest से release किया, इसका initial velocity क्या है 0 meters per second. And particle P collides with the particle Q of 0.1 kg, which is at rest at B. तो यहाँ पे ये particle P था ऊपर.
और नीचे B के ऊपर आपका एक पार्टिकल Q है रेस्ट के ऊपर। ओके, दोनों के masses दिए हुए। Immediately after the collision, the speed of P is 4 meters per second in the direction of BC. So Q right side पे जाता है। You should assume that P is moving horizontally when it collides with Q. इसका मतलब ये है कि जब P नीचे P को Q से कोलाइड करता है, आपने उसको हॉरिजॉन्टली ट्रीट करना है। ये नहीं ट्रीट करना है कि वो एंगल पे लग रहा है, आपने उसको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो हॉरिजॉन्टली उनके कोलिजन हो रही है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अच्छा एंगल पे कोलाइड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कोलिजन ही हो रही है। This thing can show that the speed of Q immediately after the collision is 10 meters per second. Now, what information do we have? Collision के बारे में हमें क्या पता है? We have two particles, we have P and Q. Before collision, देख लें क्या होता है, वो क्या information है हमारे पास, और after collision क्या information. Let's think about that. Before collision, do we know the velocity of P? Well, we don't. हमें नहीं पता अभी, but we can see if we can figure that out. वो भी हम देखते हैं। Q पे आप Q की velocity क्या है initial? That's 0 meters per second. Q की speed after collision, P की speed after collision क्या है, उसने क्या है 4 meters per second है, और आपको Q की speed after collision find करनी है, जिसको आपने 10 assume नहीं करना है, आपने find करनी है। अगर हम किसी तरह से P की speed निकाल लें before collision, तो हम conservation of momentum लगा के निकाल सकते हैं किसी तरह से, right? So the problem is how do we find this initial velocity of P? वो हमें figure out करना, ठीक है? अब वो कैसे figure out करेंगे? देखिए P ने ऊपर से start किया यहाँ से, it's a smooth track, so keep that in mind, it's a smooth track like this. That means there's no resistance. There's no resistance and there's no driving force. There's no resistance and there's no driving force. Resistance भी नहीं है और ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है। रिमेंबर, जब ये दोनों चीजें होती हैं तो आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। इसके ऊपर आपने कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मूलाज नहीं लगाने प्लीज। जब भी आपके पास इस तरह से कर्व सरफेस होता है ना, वी कैन नॉट यूज कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मूला है, बिकॉज यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है एंड एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूलाज इस तरह की प्रॉब्लम्स में बिल्कुल नहीं लगाने, आपको मार्क्स काट देता है वो। इवन इफ द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बाय कोइंसिडेंस, आपके आंसर भी उस तरह से ही आ रहा हो, लेकिन आपके मार्क्स काट लेता है वो उससे, ठीक है? तो आपने जब भी इस तरह का सर्फेस आएगा तो या तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर लेना है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेनी है। अब देखें, देयर इज नो रेजिस्टेंस, नो ड्राइविंग फोर्स, का मतलब एनर्जी कंजर्व होगी। तो इसका मतलब यह है द टोटल एनर्जी एट P, total energy at P, you can say kinetic energy at P, at A in fact, P की बात हो रही है, P की kinetic energy at A plus the potential energy at A, that is equal to P की kinetic energy at B plus the potential energy at B. अच्छा देखें, kinetic energy initial क्या होगी, 0 होगी because velocity 0 है। हाइट कितनी है, 1.8 है, तो 1.2 that's the height. mass कितना है P का, 0.5 into G which is 10 into height which is 1.8. ये आपकी पहले सिचुएशन है। आफ्टर कोलिजन के नॉट आफ्टर कोलिजन, जब पार्टिकल P B पे आ जाएगा नीचे, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमें नहीं पता, उसको हम कह लेते हैं हाफ इंटू mv², mass is 0.5 v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब वो ग्राउंड पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। mgh आप करेंगे, h की वैल्यू 0 होगी, तो ये आपके पास 0 हो गया, ठीक है? यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स इवैल्यूएट दैट एंड सी व्हाट दैट टर्न्स आउट टू बी। 0.5 into 10 into 1.8 divided by or in fact multiplied by 2 divided by 0.5, that's giving me 36. 36 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6। v की वैल्यू 6 आ गई। ये हमें क्या दे रहा है, this is the velocity of the particle P at the point B before collision. Just before it collides with the particle B, इसकी velocity कितनी है, 6 meters per second। तो अब यहाँ पे लिख लें
अब ये 6 मीटर्स पर सेकंड हो गई है। आपको सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। रिमेंबर पी का मास कितना है 0.5 किलोग्राम्स, क्यू का मास कितना है 0.1 किलोग्राम्स। लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Momentum before collision is equal to momentum after collision, right? Total momentum before collision, that should equal the total momentum after collision. That's what you have to use here. Momentum before collision क्या होगा? P का देख लें momentum कितना है? Mass is 0.5 into velocity, that's 6, plus Q का initial momentum, that's a 0 because उसकी velocity 0 है. Or if you want, you can say 0.1 into 0. After collision momentum कितना है? P का कितना होगा? 0.5 into velocity, which is 4. Remember P के साइड मूव कर रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। या P राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो Q भी ऑफ कोर्स राइट पे मूव करेगा। प्लस mass of Q, which is 0.1 into VQ. इससे आपके पास VQ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 6 into 0.5 is 3 plus 0. We have 3 on the left side. On the right side, we have 0.5 into 4, that's 2 plus 0.1 into VQ. And that is going to give us VQ equal to 10 meters per second. That is what we were looking for. That's the velocity of Q just after collision. ठीक है, ये आपको figure out करना था first part में. Let's move on. Look at the second part and the third part. Okay, we have 2 more parts to go. When Q reaches C, it collides with a particle R of mass 0.4 kilograms. So now there's another particle here of mass 0.4 kilograms, which is at rest at C. The 2 particles coalesce. The combined particle comes in instantaneous rest at F. Okay, so there's some point F here. You should assume that there is no instantaneous change in speed as the combined particle leaves C. Okay, so मतलब ये उस surface पे जाने पे, inclined surface पे जाने से कोई speed में एकदम से कोई change नहीं आती है उससे, ठीक है? Instantaneous change कोई नहीं है। उसके बाद of course inclined plane पे तो वो speed change होगी। Nor when it passes through C again as it returns down the slope. अच्छा, जब वापस आएगा तब भी कोई speed में change नहीं है। Given that the distance CF is 0.4 meters, find the value of theta. Okay, so how do we think about this now? अब दोबारा से collision हो रही है। Horizontal surface भी आप देखें track है, smooth है, smooth track है। इसका मतलब जो speed आपकी Q की थी यहाँ पे 10 meters per second, वो change नहीं होगी, वो constant speed में move करता रहेगा। Coalesce का मतलब है वो combine होकर एक single particle बन जाता है, merge हो जाता है। Okay, coalesce means merge हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं दोबारा collision हो रही है Q और इस particle R की है, ठीक है? अब Q और R को देखें, Q किस स्पीड में मूव कर रहा है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन Q की जो स्पीड है वो 10 है, हमने ऊपर फाइंड किया अभी। R जो था वो रेस्ट पे था, या R इज एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये मर्ज कर जाते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। Q का मास पहले कितना था? Q का मास पहले था Q का मास था 0.1 किलोग्राम्स, R का मास है 0.4 किलोग्राम्स। जब ये कोलिजन हो जाती है आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ जाता है विच इज QR। इसका मास कितना हो जाता है 0.5 किलोग्राम्स। इन दोनों का सम 0.1 प्लस 0.4, और इसकी वेलोसिटी कितनी है ये आपको नहीं पता, ये फिगर आउट करनी। लेट्स डू दैट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें दोबारा से। मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट शुड इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, राइट? व्हाट्स द मोमेंटम बिफोर कोलिजन? 0.1 into 10 एंड R का मोमेंटम 0 आएगा। आफ्टर कोलिजन क्या आएगा? 0.5 into velocity of that merged object QR। जो merge होके QR बना है उसकी velocity। ये आप देखें क्या आती है 1 over 0.5। This is going to turn out to be 2 meters per second। ठीक है, 1 over 0.5 आपके पास 2 meters per second आ जाएगा merged object का। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, उसने कहा है the combined particle comes to rest instantaneously at F। एक F पॉइंट है यहाँ पे, उस पे जाके वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाता है।
आपको या डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस CF is 0.4 meters. Okay, so this distance is 0.4. This distance here is 0.4 meters. आपको थीटा निकालना है. Now again, there's no driving force, there's no resistance, smooth track है, friction नहीं है, driving force कोई है नहीं वैसे भी, ठीक है. तो conservation of energy होगी. हम कह सकते हैं इस combined particle की जो kinetic energy है plus potential energy है at the point C, that's going to be equal to kinetic energy plus potential energy of this combined particle at the point F. ठीक है, वो इक्वल होंगे. कंजर्वेशन एनर्जी बिकॉज रेजिस्टेंस भी नहीं है, ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है, अब हम कंबाइंड पार्टिकल की बात कर रहे हैं. अब इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी में पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी कंबाइंड पार्टिकल की, 2 meters per second. सो सॉरी, वेलोसिटी 2 meters per second थी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, हाफ इंटू एम. एम कितना है इसका 0.5 कंबाइंड पार्टिकल का, इंटू स्पीड विच इज 2 का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम इसको बेस लेते हैं अपनी, तो इनिशियल हाइट तो 0 है, ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होगी. दैट इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट F, वहां पे जो रेस्ट पे आ जाता है काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, मास इज 0.5 into g which is 10 into height. Height कैसे आएगी, that's what we have to figure out. This is the diagram that we have. Vertical height चाहिए हमें, angle theta given us, so it's a triangle like this. ये triangle है, we know this is 0.4. What about the height? Perpendicular hypotenuse कौन सी रेशो होती है, sin. We can say h over 0.4, that equals sine of theta, and h equals 0.4 sin theta then. तो अब यहाँ पे क्या करें, इसकी जगह पे डाल दें 0.4 sin theta. यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. Let's see what that turns out to be. 2 into 0.5 is 1 here. On the right side, you have 5 into 0.4 into sine theta. Let's see what this is. Sine theta equals 1 over 0.4. Okay, just give me a minute. I'm sorry. My daughter is calling me. Just need to attend to her. Okay, so what do we get from this? It seems to be something wrong here. Sine theta. अच्छा ये तो हो नहीं सकता, ये मैंने कुछ यहाँ पे mistake किया. 0.4 into 5. Okay, she's calling again. Sine theta यहाँ पे आना चाहिए 1 equals क्या आता है 0.4 into 5, that's 2 sine theta. So sine theta equals 0.5 और साइन इनवर्स कर लें इसका, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इक्वल्स 30 डिग्रीज. दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉर हियर. ठीक है, ये आपको थीटा फाइंड करना था, दैट्स द एंगल दैट वी हैव. ओके, लेट्स मूव ऑन. Part C now says find the distance from B at which P collides with the combined particle. Okay, so now what happens is ऊपर जाके वो पार्टिकल पर नीचे आ जाता है, दोबारा से नीचे आके फिर दोबारा से लेफ्ट में मूव करने लग जाएगा. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये फाइंड करना है कि वो कितने डिस्टेंस पे जाके B से कितना डिस्टेंस है जब उसकी P से कोलिजन होती है. अच्छा, नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस. B to C कब से टाइम स्टार्ट करना है, सॉरी डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, एट विच P collides with the combined particle. All right, so we have this horizontal surface. एक पार्टिकल आपके यहाँ पे P है. P आप देखें जो फर्स्ट कोलिजन हुई थी उसके बाद ये किस स्पीड पे मूव कर रहा था, राइट साइड पे 4 meters per second पे मूव कर रहा था राइट साइड पे. सो P is moving at 4 meters per second to the right. ओके, और फिर
राइट साइड पे जाके आपके पास क्या है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो अभी ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब जिस स्पीड पे इसने ऊपर जाना शुरू किया था 2 मीटर्स पर सेकेंड पे, जब ये वापस आएगा तब भी उसकी स्पीड सेम ही होनी चाहिए, राइट। जब ये वापस आता है इधर तब भी उसकी स्पीड उतनी ही होनी चाहिए, या तो जब ये ऊपर गया था कंबाइंड पार्टिकल, किस स्पीड पे उसने ऊपर जाना शुरू किया था, 2 मीटर्स पर सेकेंड पे। सिंस एनर्जी कंजर्व हो रही है, जब वो वापस पहुंचेगा दोबारा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दोबारा से 2 मीटर्स पर सेकेंड होगी। तो क्यू आर की स्पीड इस पॉइंट पे जब वो नीचे आएगा वापस तो कितनी होगी, वो अब दोबारा से 2 मीटर्स पर सेकेंड ही होगी, ठीक है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज पी जो है वो पहले से चलता आ रहा है, पी जो है वो पहले से चलता आ रहा है, बिकॉज पहली जब कोलिजन हुई थी, फर्स्ट कोलिजन, पी तो तभी से राइट साइड पे मूव कर रहा है, राइट। पी तब से राइट साइड पे मूव कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये है कि लेट्स से हमारे पास टाइम इक्वल 0 था कभी, जब पी और क्यू की कोलिजन हुई थी। हम टाइम इक्वल 0 ले रहे हैं जब पी और क्यू ने कोलाइड किया था सबसे पहले। तो क्यू उसके बाद क्या हुआ, उसने इस पॉइंट बी से सी पे ट्रैवल किया। ये डिस्टेंस कितना था उसने दिया हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस था हमारे पास 7 मीटर्स। 7 मीटर्स इसने ट्रैवल किया क्यू ने। इसको कितना टाइम लगा वहां पे जाने में, सी तक जाने में, लेट्स फिगर दैट आउट। स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड थी, तो टाइम आपके पास कैसे आ सकता है इसका, नहीं सॉरी 2 मीटर्स नहीं थी, यहाँ पे हमने निकाली थी पहले, क्यू की स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड थी। तो क्यू क्या कर रहा था पहले, क्यू राइट साइड पे गया, उसने टाइम लिया और उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 7 मीटर्स, और उसका जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। वो कितनी स्पीड थी, 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो टाइम इसका कितना हो जाएगा, टाइम आपके पास यहाँ से आ सकता है डिस्टेंस विच इज 7 ओवर द स्पीड विच इज 10। टाइम आपको लगा 0.7 सेकेंड्स, क्यू को टाइम लगा किस में, बी से लेकर सी पे जाने पे। तो इतने टाइम अब पी भी मूव कर चुका है ऑलरेडी इस पॉइंट तक, ठीक है। दैट्स वन थिंग दैट इज हैपनिंग, पी ने इतना टाइम ऑलरेडी मूव कर लिया हुआ है, 0.7 सेकेंड उसको गुजर चुके हैं पहले। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो कंबाइंड पार्टिकल है ये ऊपर गया है और फिर वापस नीचे भी आया है, इसमें कितना टाइम लगा है, दैट्स व्हाट वी आल्सो हैव टू फिगर आउट, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी है। पहले तो हमने देखा बी से सी तक क्या हो रहा था, अब उसके बाद क्या हुआ, क्यू गया सी से लेकर एफ तक और फिर वापस सी पे आया, ठीक है। अब सी से एफ पे गया और फिर वापस सी पे आया। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि इस पे आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, स्मूथ सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, राइट। इसका मतलब ये है जो एक्सेलरेशन होगी इस केस के अंदर इस डायरेक्शन में वो कितनी होनी चाहिए, 10 sin 30। इफ यू रिमेंबर, जब आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी होता है इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 10 sin 30, 10 sin थीटा, सॉरी 10 sin थीटा, ओके। नीचे की तरफ 10 sin थीटा, बिकॉज सिर्फ 10 नीचे को लग रहा है, तो उस एंगल के ऊपर कितना लग जाएगा, 10 sin थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है इस पॉइंट के ऊपर, इस रीजन के अंदर, दैट्स 10 sin थीटा, दैट्स द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। और हमें क्या पता है उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 0.4 मीटर ऊपर ट्रैवल किया था, 0.4 मीटर नीचे वापस ट्रैवल किया, तो टोटल 8.8 मीटर्स हो गया डिस्टेंस, अगर हम पूरा जर्नी ले लेते हैं। हमें ये भी पता है कि इनिशियल स्पीड कितनी थी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0.8 नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर वो ऊपर जाता है और हम पूरी जर्नी कंसिडर करें, ऊपर जाते हुए 0.4 लगा, वापस आते हुए 0.4 लगा, तो टोटल हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जो 0 होगी, क्योंकि वापस आ गया अपने पोजीशन पर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ गई, व्हाट एल्स डू वी हैव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास और क्या था, स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी ऊपर जाते हुए, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ऊपर जाते हुए कितनी थी, 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये यूज कर लें, इससे हमारे पास क्या आएगा, टाइम आएगा, ओके। जिसके
Sorry about that. So I think we are very late, so that's why I'm getting calls again and again. Okay, so ये हमारे पास acceleration, displacement और u की value है. इससे हम क्या कर सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं इस जर्नी का. a, s और u को और t को कौन सी equation कनेक्ट करती है? Let's figure that out. s equals ut plus half at square, वो यूज कर सकते हैं. Let's do that. S की value 0 है. U is 2 into time. वो मैं figure out करना है. Half into a, which is 10 sin theta. Theta की value हमने 30 निकाली है ऊपर into t squared. ठीक है. Let's figure this out. 2t plus 5 over 2. That's 2.5 t square. इसको solve कर लें. इससे बस देखना आपके पास क्या value आती है. T common ले लें. We're left with 2 plus 2.5 t inside. And the value of t turns out to be spinning on negative. यहाँ पे acceleration की value यहाँ पे negative होनी थी because हमने ऊपर वाली side positive assume की हुई है. ये side positive ली है ऊपर वाली, तो acceleration नीचे की तरफ लग रही है, तो acceleration की value यहाँ पे क्या होगी? Negative लेनी चाहिए थी हमें. This is actually minus 10 sin 30. This is negative, so this should be negative here. और उससे हमारे पास क्या आ जाता है? t की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2 over 2.5 and that turns out to be 0.8 seconds. तो उस पॉइंट से पहले जब c वापस आया है, उस पॉइंट से पहले कितना टाइम गुजर चुका है? 0.7 और 0.8 टोटल 0.15 सेकेंड्स टोटल टाइम गुजर चुका है ऑलरेडी. ठीक है. अब उतने टाइम में p ने कितना ट्रैवल कर लिया है? p ने उतने टाइम में कितना ट्रैवल कर लिया वो डिस्टेंस? उसकी स्पीड कितनी थी? p की स्पीड कितनी थी? लेट्स फिगर दैट आउट हियर. यहाँ पे कहीं लिखी हुई थी 4 meters per second. उसने इतने टाइम में 4 into 0.15 0.6 meters ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया हुआ है. ऑलरेडी उसने इतना ट्रैवल कर लिया हुआ है इस पॉइंट तक. ठीक है. तो अब बाकी डिस्टेंस कितना रह गया है? बाकी डिस्टेंस आपके पास कितना रह गया है? टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 7 meters था. बाकी आपके पास डिस्टेंस रह गया. ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ये टाइम की वैल्यू 0.8 1.5 थी. सॉरी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. This is actually 1.5 meters. So this is 1.5. तो इसने 6 meters ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया हुआ है. बाकी कितना बचा है? 1 meter. 1 meter ट्रैवल करें. P जो है राइट साइड पे जा रहा है 4 meters per second पे. QR लेफ्ट साइड पे जा रहा है कितनी स्पीड पे? QR लेफ्ट पे जा रहा है at a speed of 2 meters per second. तो टोटल स्पीड कितनी होगी है इसमें? 6. तो कितना डिस्टेंस और कितना टाइम और लगेगा? एडिशनल टाइम. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 1 over total speed. So combined speed कितनी हो जाएगी? Relative velocity, that's going to be 6, and that's going to give us 1 over 6, which is 0.1667. इतना टाइम और लगेगा. इतने टाइम में P ने और कितना ट्रैवल कर लिया होगा? P ने और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इतने टाइम के अंदर? 4 into 1 over 6. ये डिस्टेंस उसने और ट्रैवल कर लिया होगा. ठीक है. सो दैट्स 2 over 3. तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? Traveled by P at this point, that would be 6 plus 2 over 3, and that's 6.67. Okay. Now you can make this slightly slower and try to go through this again, and I hope that would make sense. 6 from this paper. Let's have a look at this. It says 3 particles A, B, and C of mass is 0.3 kg, 0.4 kg, and m kg respectively lie at rest in a straight line on a smooth horizontal plane. The distance between B and C is 2.1 meters. A is projected directly towards B with speed 2 meters per second. After A collides with B, the speed of A is reduced to 0.6 meters per second, still moving in the same direction. Show that the speed of B after the collision is 1.05. अच्छा देखें, ये 3 masses दिए हमें A, B और C के. They lie on a smooth plane. Plane smooth है, इसका मतलब है कोई deceleration नहीं है. जिस स्पीड में मूव कर रहे हैं उसी स्पीड में मूव कर रहे हैं. स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेंगी.
जब वो उनकी मूवमेंट हो रही है, राइट, बिकॉज कोई भी फोर्स इन पे एक्ट नहीं करी है इस तरह से। बी और सी का डिस्टेंस दिया हुआ है और बी की इनिशियल स्पीड दी हुई है और फिर ए की स्पीड इसमें क्या है 0.6 पे आ जाती है, still moving in the same direction. Okay, so this is the information that's given. Let me represent that here. सबसे पहले उसने कहा है b की स्पीड फाइंड करनी है, तो पहले हम a और b को देख रहे हैं। So if we're not concerned about c at this point, a and b look like this. Okay, a is projected towards b with speed 2 meters per second. This is what is happening. a को आप राइट साइड प्रोजेक्ट कर रहे हो 2 meters per second पे, ठीक है। So early before collision speeds क्या है इनकी 2 meters per second for b, इनिशियली सारे रेस्ट के ऊपर है तो b की इनिशियल स्पीड 0 है। आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपेंस इज a की स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 0.6, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अभी भी राइट पे मूव कर रहा है बट नाउ 0.6 meters per second। आपने क्या फाइंड करना है, b की स्पीड फाइंड करनी है, लेट्स कॉल दिस vp। कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करते हैं, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, a का मास कितना है, a का मास है 0.3 kilograms, B is 0.4 kilograms. Let's apply conservation momentum. Mass of A, which is 0.3, into velocity of A, that is 2, plus mass of B, which is 0.4, into velocity of B, which is 0. That equals final momentum, momentum after collision. वो क्या हो जाएगा 0.3 into 0.6 plus 0.4 into VB. यहाँ से आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी. You can see what that turns out to be. Okay, so VB is going to be 0.6 minus 0.18 divided by 0.4, and that's giving me 1.05 meters per second. ठीक है, ये आपके पास velocity आ गई B की. That's what we were looking for. Let's look at the second part of this. It says after the collision between A and B, B moves directly towards C. B now collides with C. After this collision, the two particles coalesce and have a combined speed of 0.5 meters per second. Okay, so now we are talking about B and C. So we have this particle B and we have this particle C. Before collision क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग particles हैं, तो हम उनको अलग अलग पहले यहाँ पे इस तरह से represent कर लेते हैं. B is moving to the right, remember 1.05 meters per second पे. This is 1.05 meters per second. What about C? C was at rest, right? वो तो rest पे. This is 0 meters per second. What happens after collision? उसने कहा the two particles coalesce. Coalesce का मतलब होता है वो merge हो जाते हैं, एक single object बन जाते हैं. Let's call this merged object. इसको भी नाम दे देते हैं. इसको कहते हैं हम, ये आपके पास जो combined particle is, this is D. Okay, so after collision, what you have is particle D. D की speed कितनी है? 0.5 meters per second. Okay, now of course right पे move कर रहा होगा वो भी, because B ने left से आके C को hit किया है, तो movement जो है right पे हो सकती है, left पे तो जा नहीं सकते वो. तो ये आपके पास D की speed आ गई to the right. ठीक है, अब क्या करना है आपको, M find करना है. What was M? B का mass उसने दिया हुआ था, B का mass was 0.4 kg. So B का mass is 0.4 kg. C का mass was M. D का mass कितना आएगा? D का mass will be the sum of those two, M plus 0.4. Again, apply conservation of momentum. That's all that you have to do here as well. Momentum before collision, that should be equal to momentum after collision. All right. Now, what's the momentum before collision? 0.4 into 1.05 plus M into 0. On the right side, you have M plus 0.4 whole multiplied by 0.5. इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है 0.4 into 1.05. Let's figure out what this turns out to be. This is 0.42 on the left side. On the right side, you have 0.5 m plus 0.4 into 0.5, and that is giving me 1/5, which is 0.2. 0.5 m equals this. यहाँ से आपको m की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली लिखते हैं आप. 0.42 minus 0.2, that's going to be 0.4. 0.4 divided by 0.5, and that turns out to be 4/5, which is 0.42 minus 0.2 divided by minus 0.42 minus 0.2, which is 0.22 divided by 0.5, and that is 11/25 or 0.44 kilograms. That's
what the mass turns out to be here. Okay, that was the second part. First two parts, काफी आसान थे. Let's move on to the next one. Now it says find the time that it takes from the instant when B and C collide until A collides with the combined particle. Okay, now that's interesting. This is something that will need some thinking. From the instant when B and C collide until A collides with the combined particle. अच्छा देखें, आपको अब शुरू से देखना पड़ेगा. शुरू से क्यों देखना पड़ेगा? Because शुरू से नहीं भी देखें तो आपको देखना पड़ेगा जब A और B की कोलिजन हुई थी, पहली कोलिजन, उसके बाद से. Because उस कोलिजन के बाद A भी तो मूव कर चुका होगा ना कुछ, तो आपको उसका भी सोचना है कि A कितना मूव कर गया है, वो कहाँ पे चला गया है before the second collision happens. Okay? तो let's think about this. सबसे पहले हम देखते हैं जब पहली कोलिजन हुई थी. पहली कोलिजन के बाद we can say A was here, B was right next to it, and C was at a distance of, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे कहा था, it's at a distance of 2.1 meters. This is the initial state. Initial मतलब जब A और B की कोलिजन है, उस पॉइंट पे this is how it looks like. This is 2.1 meters. अब देखते हैं क्या होता है. अब इस पॉइंट के बाद B राइट पे मूव कर रहा है. इस पॉइंट के बाद B राइट पे मूव कर रहा है और A भी राइट पे मूव कर रहा है, दोनों राइट पे मूव कर रहे हैं. अब B को C से जाके कोलिजन में कितना टाइम लगता है, ये हमने देखना है. ठीक है, B जाके C को हिट कर रहा है, उसको कितना टाइम लगता है उसको हिट करने में, जाके सबसे पहले ये फिगर आउट करते हैं. रिमेंबर, फर्स्ट कोलिजन के बाद A और B की स्पीड क्या थी, ये हमने कहीं पे निकाली हुई है. पहले A की स्पीड उसने बताई हुई थी 0.6, B की स्पीड हमने निकाली है 1.05. लेट्स पुट देम देयर, 0.6 and 1.05 यहाँ पर लिख लेते हैं. A की स्पीड was 0.6 meters per second after the first collision and B की स्पीड was 1.05 meters per second. ये उन दोनों पार्टिकल्स की स्पीड है right after the first collision. अब नेक्स्ट कोलिजन से पहले कितना टाइम लग गया, नेक्स्ट कोलिजन से पहले कितना टाइम लग गया, ये आपको पहले फिगर आउट करना है. So let's find the time taken for B to hit C. B से C पे जाने में कितना टाइम लगा है, let's figure this out first. In fact, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. इसको कहते हैं हम, ये पॉइंट X है and this point is let's say Y. तो X से Y पे जाने में कितना टाइम लगा है B को, X से Y पे जाने B को कितना टाइम लगा है, ये हम देखना चाह रहे हैं. B की स्पीड पता है हमें 1.05. इट्स कांस्टेंट स्पीड, राइट, कांस्टेंट स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट इज 2.1, तो हम निकाल सकते हैं इसको टाइम कितना लगा आएगा, जस्ट डिस्टेंस ओवर स्पीड, राइट. कांस्टेंट स्पीड में हम वो सिंपल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट. यस सर, यू कैन जस्ट डू दैट. Distance over speed in this case because the speed is constant. So 2.1 divided by 1.05. Let's see what that turns out to be. 2.1 over 1.05. This is giving me 2 seconds. ठीक है, this is 2 seconds. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के दरमियान में 2 seconds लगे हैं. This is time between the two collisions. अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इतने टाइम में A भी तो राइट में मूव कर रहा था, तो A कहां पे पहुंच गया है, मूव करते करते A किस पॉइंट पे पहुंच गया, राइट. इन 2 seconds के अंदर A कहां पे पहुंच गया, ये फिगर आउट करना. टाइम इक्वल्स 2 इनपुट करें. A की स्पीड कितनी है, A की स्पीड हमारे पास है 6 meters per second. टाइम इज 2. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, इससे हमारे पास A का डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा. दैट्स गोइंग टू बी 2 into 6 into 2. That turns out to be, there's something wrong here. 6 into 6, 0.6 था, sorry. Yeah, so इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है. So this is 0.6 and that is 1.2 meters. तो जब आपकी सेकेंड कोलिजन हुई है तो A कहां पे पहुंच गया है, वो 1.2 मीटर्स उसने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया हुआ है. तो अब आपको पता चला है उनकी पोजीशंस क्या है, ठीक है. अब देखते हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं जब सेकंड कोलिजन हुई है. सो आफ्टर सेकंड कोलिजन नाउ,
दिस इज व्हाट द स्टेट इज, ये आपने पहले फिगर आउट करना था। ये पॉइंट एक्स था पहले, राइट, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था बी और सी ने। ए जो है आगे मूव कर गया, इस पॉइंट पर आ गया कहीं पे। कितना ट्रैवल किया इसने? इसने ट्रैवल कर लिया 1.2 मीटर्स। 1.2 मीटर्स ने ट्रैवल कर लिया। अब जहां पे बी और सी कोलाइड कर रहे हैं, जहाँ पे पार्टिकल डी बन गया, उस पे टोटल डिस्टेंस कितना था वहां तक? टोटल डिस्टेंस वाज 2.1 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस शुरू में 2.1 मीटर्स था। तो अब कितना डिस्टेंस रह गया ए और बी के दरम्यान में? इनका डिफरेंस फाइंड कर लें। 1.2 meters and 2.1, that's going to give you 0.9 meters. तो ए और डी जो है इनके दरमियान में इस टाइम के ऊपर, इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर कितना डिस्टेंस है? 0.9 मीटर्स डिस्टेंस है ए और डी के दरमियान में। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर दिस इज द डिस्टेंस। अब बाकी सब कुछ यहाँ से इरेज कर देते हैं। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट द सिचुएशन लुक्स लाइक। नाउ दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, अब इस पॉइंट पे इनकी स्पीड्स क्या है? ए इज मूविंग टू द राइट। A is moving to the right at what speed? 0.6 meters per second. What about D? D क्या करे? D is रखा हुआ है, yeah, combined speed कितनी है? 0.5. D is moving at a speed of 0.5 meters per second. D is moving to the right at 0.5 meters per second. अब क्या होएगा? उसने कहा है find the time that it takes from the instant when B and C collide. अब ये जो second collision हो गया, इसके बाद D बन गया, इसके बाद कितना टाइम लगा है इस second collision में? ओके, तो अब हम क्या करें? अब हम देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 0.9 मीटर्स का डिस्टेंस है, ये गैप है इनके दरमियान में। अब ये गैप कैसे कम होएगा? अब देखें कितनी स्पीड पे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ए की स्पीड कितनी है? 0.6 मीटर्स पर सेकेंड। और डी की स्पीड कितनी है? 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनके दरमियान में गैप कितने से कम हो रहा है? इनके दरमियान में गैप किस स्पीड से कम हो रहा है? A is moving 0.1 meters per second faster, right? So 0.6 minus 0.5, इससे हमें मिलता है 0.1 meters per second. This is the relative velocity between them. एक दूसरे से कम के relative ये 0.1 meters per second इनके दरमियान में speed इस rate के ऊपर कम हो रही है. So this is the speed, this is the relative velocity between the two particles. Okay? तो अब time निकालना है आपने. Time कैसे आएगा? Distance कितना था दोनों के दरमियान में, और उनकी स्पीड क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, किस स्पीड से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं 0.1 के ऊपर। तो आप क्या करेंगे? 0.9 divided by 0.1 and that gives you 9 meters per second. Sorry, 9 seconds. Time था यहाँ पे, so this is going to be 9 seconds. 9 seconds लगेंगे for A to catch up with B. Sorry, this is question number 7 from the paper. Let's start with this one now. It says two particles A and B of mass 0.4 kilograms and 0.2 kilograms are moving down the same line of greatest slope of a smooth plane. Okay, so we have a smooth plane and it's an inclined plane, और इस plane के ऊपर ये plane पे दोनों नीचे जा रहे हैं particles. Okay, अच्छा, let's actually draw this such because that will help us understand the situation better. So it's an inclined plane like this. It's inclined plane पे the particles are going down like this. The plane is inclined at 30 degrees to the horizontal. So this angle that we have here is 30 degrees. A is higher up the plane than B. Okay, so if A is here, then B may be here, let's say. We have their masses given. 0.4 kg and 0.2 kg respectively. When the particles collide, the speeds of A and B are 3 meters per second and 2 meters per second respectively. In the collision between the particles, the speed of A is reduced to 2.5 meters per second. Find the speed of B immediately after the collision. Okay, so ये तो simple application है conservation of momentum की. Let's write this down here on the side. So we have particle A and we have particle B. एक डायरेक्शन हमें क्या करना है? पॉजिटिव अज्यूम करनी है. ओके, सो नीचे की तरफ आ रहे हैं दोनों पार्टिकल्स, हम कहते हैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है हमारे लिए. ठीक है. नाउ बिफोर कोलिजन, what are the speeds of A and B? Before collision, A is moving at 3 meters per second and B is moving at 2 meters per second.
And after collision, the speed of A becomes 2.5 meters per second. What we have to find is the speed of B after collision. Let's call this V, B. ये आपको find करनी है. ठीक है, conservation of momentum apply कर दें. Momentum before collision is equal to momentum after collision, right? So that's what we do. Mass into velocity. Mass into velocity is the formula that we have for momentum. A का mass कितना है? 0.4 kg. B का mass कितना है? 0.2 kg. Let's just apply that conservation of momentum. Momentum before collision. What's that? 3, or let's say 0.4. That's the mass of A into velocity of A, which is 3, plus 0.2, the mass of B into velocity of B, which is 2. This is momentum before collision. After collision, क्या होगा momentum? यहाँ पे लिख देते हैं, in fact. Just to make sure you know what we're doing. This is momentum before collision. And then we have momentum after collision. Since momentum is conserved, they have to be equal. After collision क्या होगा? 0.4 into 2.5 plus 0.2 into VB. यहाँ से हम VB figure out कर लेंगे. ठीक है, इसको solve कर लेंगे. देखिए आपके पास क्या आता है? 0.4 into 3 minus plus 0.2 into 2 minus 0.4 into 2.5 and divided by 0.2. What do we get from that? This is giving me 3. So that's the velocity of B after collision. ठीक है, ये आपकी B की velocity after collision. That's what you had to find out. The first part was pretty straightforward. Let's move on to the next one now. Aswad, I'll do that after 12th inshallah. 12th को A levels के papers खत्म हो जाएंगे, उसके बाद inshallah. Okay. अच्छा. Let's look at the next part. After the collision, when B has moved 1.6 meters down the plane from the point of collision, it hits a barrier and returns back up the same line of greatest slope. B hits the barrier 0.4 seconds after the collision, and when it hits the barrier, its speed is reduced by 90%. The two particles collide again 0.44 seconds after their previous collision, and then they coalesce in impact. Okay, so that's a lot happening, right? Let's try to understand that using this diagram. This diagram को नीचे ले आते हैं. And let's see what's happening now. अब क्या कर रहे हैं? Collision के बाद वाला हम consider कर रहे हैं सारी situation. Collision हो चुकी है, collision के बाद क्या हो रहा है? That's what we are thinking about. Okay. अब जब collision हुई है जिस point के ऊपर, these particles are next to each other. So particle B may be here. And let's say this is particle B, and particle A is also next to it. Let's say that's particle A. ठीक है, अब collision के बाद दोनों move तो नीचे की तरफ ही कर रहे हैं, right? दोनों नीचे की तरफ ही move कर रहे हैं. उसने क्या कहा है? When B moves 1.6 meters down the plane, it hits a barrier. तो यहाँ पे नीचे ना कहीं पे barrier है. So let's say barrier is somewhere here. ये barrier को आके hit करता है. Barrier तक distance कितना है? This distance is given to be 1.6 meters. Okay. Now, how much time does this take? It says B hits the barrier 0.4 seconds after the collision. 1.6 meter distance है, और time कितना लगता है उसमें? 0.4 seconds लगता है. And when it hits the barrier, its speed is reduced by 90%. Okay. अब देखें यहाँ पे जाके बैरियर को हिट करता है, इसकी स्पीड जो भी होती है जब बैरियर को हिट करता है उसके बाद 90% रिड्यूस हो जाती है और वो वापस ऊपर की तरफ पे ज़ाहिर है वापस आता है. जब हिट करेगा यहाँ पे तो उसके बाद रीबाउंड करेगा, राइट? लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है. उस कोलिजन का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से स्पीड इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है. उसके बाद the particles collide again 0.44 seconds after their previous collision and then they coalesce in impact. हमें क्या करना है? We need to show first of all that the speed of B after collision immediately after it hits the barrier is 0.5 meters per second. How do we do this first of all? देखें, B नीचे को मूव कर रहा है, इस पे कौन सी forces लग रही हैं? The only force that's acting on B is its weight. Weight का एक component नीचे की तरफ लग रहा है. That's all that is happening, right? जब weight सिर्फ when weight is the only force acting on an object on an inclined surface, तो उसकी जो acceleration होती है वो क्या होती है? इसकी acceleration कितनी होगी? 10 sin theta. Acceleration कितनी होगी? 10 into sin theta. Why? Because downward acceleration 10 होगी. Okay.
and acceleration is a vector quantity. उस 10 का component find कर लें आप plane की direction के अंदर, तो कितना आएगा? That's going to be 10 sin 30, right? Because this angle 30 is the angle of the plane, theta is the angle of the plane, तो ये 10 sin 30 हो जाएगा, ठीक है? So this is a standard rule that we have whenever we have a smooth plane और उस पर कोई object नीचे को जा रहा है without any external forces, तो जो acceleration होती है वो 10 sin theta होती है, okay? अच्छा, acceleration 10 sin theta, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 sin 30 is 1/2. Acceleration is going to turn out to be 5 meters per second square here. ठीक है? Again, keep in mind, B नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं? नीचे वाली डायरेक्शन B के लिए पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं, ओके? अभी के लिए we are assuming downward to be positive, ओके? अच्छा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन में नीचे की तरफ लग रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. What else do we know about this part of the journey? जब B नीचे बैरियर को हिट करे और हमें क्या पता है? और हमें ये पता है कि इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, जो डिस्प्लेसमेंट है, that is 1.6, and we also know that the time taken for this journey is 0.4. Now, using this information, can we find the speed at which B hits the barrier? We can find that because acceleration is constant. We can use constant acceleration formulas. Find हमें क्या करना है? Final speed find करनी है. V, A, S, and T. Which equation connects these quantities? Okay, so none of the equations given in the formula sheet connect these quantities. If you remember that fifth equation, you can use that directly. So remember, आपके पास एक तो ये equation होती है ना, S equals ut plus half at square. This is given in the formula sheet. इसी में ना अगर आप u की जगह पे v कर दें और ये प्लस के साइन की जगह माइनस कर दें, this is another equation that you have. In this case, it's going to be quicker to just use this equation. It's not given in the formula sheet, but it's an extra equation that you can remember this way. कि जो ut वाली equation होती है, ut plus half at square, उसमें u की जगह v कर दें और sin minus कर दें. This is another equation that you have. You can use this equation and find the value of v from this. Otherwise, आप क्या कर सकते हैं? आपको पहले वो फाइंड करना पड़ेगा, क्या मिसिंग है इसको ना, u फाइंड करना पड़ेगा. पहले u फाइंड करेंगे और फिर आप क्या करेंगे? v equals u plus at यूज करके फिर आप v भी फाइंड कर सकते हैं. So that's the other possibility. But if you know this equation directly, you can use this. S equals vt minus half at square. I'm just going to use this. S is 1.6. V is unknown. Time is 0.4 minus half into A is what? 5 into 0.4 square. We solve this equation and find the value of V from this. Okay, वो देख लें आपके पास क्या आती है. We'll get 0.4V equal to 1.6 plus this whole thing. 1.6 plus 5 into 0.4 squared divided by 2. And that is giving me 2 on the other side. V turns out to be 2 over 0.4, which is 5 meters per second. Okay, V की स्पीड कितनी है? 5 meters per second. जब वो बैरियर को हिट करता है, ठीक है, this is the speed of B just before it hits the barrier. Okay, just before hitting the barrier. That's the speed of V. Okay, what about the speed of B after hitting the barrier? उसने कहा है its speed is reduced by 90%. To 90% नहीं कहा, ये आपने थोड़ा सा वो स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़नी है. By 90%. To 90% होता तो हम कहते हैं कि इसका 90% फाइंड कर लें. By 90% का मतलब है कि अगर आपके पास 100% था पहले, उसमें से 90% कम हो गया, इवेंचुअली क्या बचेगा आपके पास? 10% ऑफ दिस. ओके, तो आपको एसेंशियली 5 का 10% फाइंड करना है, ठीक है. सो व्हाट डज दैट टर्न आउट टू बी? आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी जस्ट आफ्टर कोलिजन, velocity of B just after hitting the barrier. My writing is getting worse. Just after hitting the barrier.
Okay, anyway. Yeah, this is legible now. जस्ट आफ्टर हिटिंग क्या होगी, 5 पहले थी, इसका 10% फाइंड कर लें, यानी 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप कहें 10/100 से मल्टीप्लाई कर दें. What do you get from that? You get 0.5 meters per second. And that's what you have to prove here first of all, कि जो speed है v की after hitting the barrier, that reduces to 0.5. Okay, so now we are at this point कि b ने barrier को hit कर लिया है और वो वापस rebound हो गया है, और उसके ऊपर की speed अब कितनी हो गई है, 0.5 हो गया. That's what we know. Now it says, hence find the speed of the combined particle immediately after the second collision between A and B. अब क्या होता है इस पॉइंट के ऊपर? Let me represent that here. So this, okay, no, this is the inclined surface, like this, right? इस inclined surface पे अब हो क्या रहा है? B ने नीचे हिट किया है बैरियर को, अभी B ने नीचे अभी बैरियर को हिट किया है. जैसे यहाँ पे बैरियर था, अब B इस पोजीशन पे ऊपर है, ठीक है, और B ऊपर को जाने लगा किस स्पीड के ऊपर, 0.5 मीटर्स पर सेकंड के ऊपर. A कहीं पे इधर है, हमें नहीं पता अभी कहाँ पर है, वो देखते हैं, उसको फिगर आउट करते हैं. और A आ रहा है नीचे की तरफ, राइट? A नीचे की तरफ किस स्पीड पर आ रहा है, वो हमें पता है, जो उसकी पहले स्पीड थी, इसके साथ एक्सेलरेशन भी हो रही है, राइट? Let me figure that out. Where is that? इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी, 2.5 उसकी स्पीड थी जब कोलिजन हुई थी उस पॉइंट के ऊपर. अभी हमें इस पॉइंट का नहीं पता, तो पहले A जब पहले था, जहां पे जब कोलिजन हुई थी वहां पे 2.5 मीटर्स पर सेकंड थी. लेकिन अब हुआ क्या है, कोलिजन के बाद पॉइंट पार्टिकल B जो है वो नीचे ग्राउंड पे पहुंच गया, बैरियर पे पहुंच गया. पार्टिकल B बैरियर पे पहुंच गया. अब इतने टाइम में A भी तो नीचे आया होगा ना थोड़ा सा. अब A कहाँ पे पहुंच गया, सबसे पहले तो हमें ये फिगर आउट करना है उतने टाइम के अंदर, ठीक है? सो अभी हम क्या सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं, एट द टाइम और कोलिजन से लेकर, A और B के कोलिजन से लेकर B हिटिंग द बैरियर, जो ये वाला टाइम इंटरवल है ना, इस टाइम इंटरवल में A भी नीचे आ गया थोड़ा सा साथ. वो कितना नीचे आया है, ये कैसे फिगर आउट करें? A के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है उस पार्ट ऑफ जर्नी के लिए? उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी कोलिजन के बाद, 2.5. एक्सेलरेशन कितनी थी, नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन तो वही होगी जो हमने ऊपर 10 sin थीटा फाइंड किया, 10 sin 30. B के लिए एक्सेलरेशन दोनों के लिए कांस्टेंट होगी, बिकॉज ये भी आपका पार्टिकल स्मूथ सरफेस के ऊपर है, नीचे को डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 है, वर्टिकल डाउनवर्ड उसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में कितना होगा, सिंस द एंगल ऑफ द प्लेन इज 30 डिग्रीज, दैट इज गोइंग टू बी 10 sin 30. ओके, सो ये आपके पास वही आ रही होगी 5. एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है. These are two things that we know about this. We also know the time that has elapsed from the collision of AB to B hitting the barrier. इसमें टाइम कितना गुजर गया अभी हमने फाइंड किया ऊपर. 0, इनफैक्ट गिवन था, उसने कहा था 0.4 सेकंड्स लगते हैं कोलिजन के बाद बैरियर तक पहुंचने में. तो 0.4 सेकंड्स में A ने ऑलरेडी कितना ट्रैवल कर लिया, अभी हम पहले ये फाइंड कर रहे हैं, और उसकी स्पीड क्या है, कितना ट्रैवल कर लिया और उसकी स्पीड क्या. वी आर लुकिंग फॉर बोथ थिंग्स, सो वी हैव एन एग्जैक्ट सिचुएशन कि वो किस पोजीशन के ऊपर है, उसकी स्पीड क्या है. लेट्स फाइंड बोथ ऑफ दोस थिंग्स यार. फाइनल स्पीड निकाल लेते हैं पहले तो. v इक्वल्स u प्लस a टाइम्स t. इससे क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2.5 प्लस 5 इंटू t 0.4. रिमेंबर a नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करें इसके लिए, नीचे वाली साइड पॉजिटिव अज्यूम करें. What do we get from this? 2.5 plus 5 into 0.4, and that's giving me 4.5. ये आपकी A की स्पीड है, ये आपकी A की स्पीड है at the time B hits the barrier. जब B ने बैरियर को हिट किया है उस पॉइंट के ऊपर जो A की स्पीड है वो कितनी है, 4.5 मीटर्स पर सेकेंड. ये हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं अभी तक सर, ठीक है? जब
बी ने बैरियर को हिट किया। तो अब ये सिचुएशन है। अब मसला ये है, हमें पता है कि कोलिजन के पॉइंट से बैरियर तक कितना डिस्टेंस था, दैट वाज 1.6 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस ये कितना था, दिस वाज 1.6। लेकिन अब ए नीचे आ चुका है, कितना नीचे आया है ये कैसे फिगर आउट करें, ये भी हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके फिगर आउट कर लेते हैं। S equals ut plus half at square लगा लें। Let's see what that gives us. U is 2.5 into time taken 0.4 into plus 1 over 2 into A, which is 5 into 0.4 squared. इससे हमें A का डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिला कुल B के बैरियर को हिट करने तक। ठीक है, ये देखते हैं कितना आता है। 2.5 into 0.4 plus 2.5 into 0.4 squared. This is giving me 7 over 5. That's 1.4 meters. Okay. ये मुझे क्या मिल रहा है, 1.4 meters. This is the distance that A has traveled. This is the distance that A has traveled until B hits the barrier. Okay, let me just confirm this. 2.5 into 0.4 plus 2.5 into 0.4 squared, and yeah, that's coming out to be 1.4 meters. तो A basically काफी नीचे आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये काफी नीचे आ चुका है। ठीक है, कितना नीचे आ चुका है, it has already traveled 1.4 meters at this point. तो अब और कितना डिस्टेंस रह गया इन दोनों के दरम्यान में, A और B के दरम्यान में, A और B के दरम्यान में जो डिस्टेंस रह गया है, that is just 0.2 meters. अब ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और इनकी आपस में कोलिजन हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे कोलिजन होती है पहले तो हमें वो पॉइंट फिगर आउट करना पड़ेगा, right? Again, that's something that's relatively complicated. Let's figure that out now. We have two particles. Let's represent that here again. B जा रहा है ऊपर को और A आ रहा है यहाँ पे नीचे को। इनके दरम्यान में टोटल डिस्टेंस कितना है? The total distance between these particles at this point now is 0.2 meters. Okay, now what do we know about A for this part of the journey? अब ये वाला part consider करें journey का। ठीक है, इसमें हमें A के बारे में क्या पता है और B के बारे में क्या पता है? Let's think about that. अब देखिए B ऊपर को जा रहा है, A नीचे को आ रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स में हम जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव ले सकते हैं। तो B के लिए अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें तो ऊपर वाली डायरेक्शन में इसकी पॉजिटिव चीजें आ रही होंगी, A के लिए नीचे वाली पॉजिटिव ले लें। ठीक है, क्योंकि A नीचे को आ रहा है, B ऊपर को जा रहा है। A के बारे में क्या क्या पता है हमें? A की स्पीड क्या है पॉइंट जब उसने स्टार्ट किया इस पॉइंट के ऊपर, 4.5 मीटर्स पर सेकेंड। B की स्पीड क्या थी जब उसने नीचे से स्टार्ट किया? B की स्पीड है हमारे पास 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसने इस पर स्टार्ट किया। लेट्स राइट दैट डाउन हियर। सो A जो है उसने स्टार्ट किया 4.5 पे और B ने स्टार्ट किया नीचे से 0.5 पे। ये इनिशियल स्पीड्स आ गए उनकी। एक्सेलरेशंस क्या होगी? A नीचे को आ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, नीचे वाली साइड पॉजिटिव लिया हमने उसके लिए। That is going to be 5 जो हमने पहले कैलकुलेट की हुई है, 10 sin 30, राइट? That's 5, वो वही रहेगी। Okay, again it's motion under gravity और तो कोई फोर्स नहीं लग रही है। B की एक्सेलरेशन क्या होगी? B के लिए हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, राइट? ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, एक्सेलरेशन नीचे को लग रही है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे -5, वो नेगेटिव होगी। What else do we know about these two particles? We know कि इनको कितनी देर बाद इनकी कोलिजन होती है, ये उसने बता दिया यहाँ पे। उसने बताया है कि इनकी कोलिजन होती है 0.44 seconds after their first collision. 0.44 seconds after their first collision. अच्छा, इसका मतलब ये है कि 0.4 seconds
बात तो बी ने उसको हिट किया था, तो 0.4 सेकेंड बाद इनकी दोबारा कोलिजन होती है। अच्छा, तो इसमें कितना टाइम लगा है फिर? 0.4 सेकेंड। इन दोनों का टाइम कितना आ रहा है? 0.4 एंड 0.4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी इनकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जब इनकी दोबारा कोलिजन होती है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जब इनकी दोबारा कोलिजन होती है। दोबारा कोलिजन कब होती है? टाइम इक्वल 0.4 के बाद, है ना? That's what it says. 0.04 के बाद, सॉरी, बिकॉज 0.44 ये है और 0.4 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.44 minus 0.4, that's going to be 0.04. इतना टाइम इन्हें और लगता है बिफोर देयर सेकेंड कोलिजन। तो हम इनकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं। इसकी स्पीड फाइंड करें, VA U plus 80, 4.5 plus 5 into 0.04। इसकी स्पीड कितनी आती है हमारे पास? इसकी स्पीड हमारे पास आती है 4.5 plus 5 into 0.04, that's 4.7। that's what I'm getting for this। A की स्पीड 4.7 मीटर्स पर सेकेंड आ गई, और B की स्पीड कितनी आती है? U plus 80 again, 0.5 minus 5 into 0.04, and that is going to give me 0.5 minus 5 into 0.04, that turns out to be 0.3 for me। Okay, ये दोनों की स्पीड्स आ गई। Now remember, what are their directions? What are their directions? A जो है, B ऊपर को जा रहा है, B ऊपर को जा रहा है और A नीचे को आ रहा है। हमने उनकी स्पीड फाइंड कर ली जस्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन। A किस स्पीड पे आ रहा है? 4.7 मीटर्स पर सेकंड पे। B किस पे जा रहा है? 0.3 मीटर्स पर सेकंड पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इनकी कोलिजन है, ये दोनों की जब कोलाइड करते हैं, ये इनकी स्पीड है दोनों की। इनके मैसेज भी पता है, ए और बी के मैसेज कितने हैं? ए और बी के मैसेज आर 0.4 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली। दिस इज 0.4 एंड दिस इज 0.2। ठीक है, अब क्या करें? कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई कर दें। दोबारा से कोलिजन हो रही है ना, तो आप क्या कहेंगे? A and B, what's the situation before collision and after collision? Before collision क्या है? A, अब देखो मोमेंटम, यू हैव टू बी केयरफुल। काइनेमेटिक्स में ना हम डिफरेंट डायरेक्शंस पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या था, हमने A के लिए नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली थी और B के लिए ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली थी। वी कुड डू दैट इन काइनेमेटिक्स। उनके पार्टिकल्स को हम अलग अलग कंसिडर कर रहे होते हैं, सेपरेटली कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप मोमेंटम यूज करते हैं, आपने एक ही इक्वेशन के अंदर दोनों को इनपुट करना होता है। एक इक्वेशन के अंदर दोनों की इंफॉर्मेशन इनपुट करनी होती है। तो उस केस के अंदर आपको थ्रू आउट सेम डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम करनी होती है। तो या तो आप अपवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे दोनों पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे मोमेंटम में, या डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे दोनों पार्टिकल्स के लिए। मोमेंटम में डिफरेंट डायरेक्शंस पॉजिटिव नहीं अज्यूम कर सकते, दोनों पार्टिकल्स की सेम डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इनमें से आप कुछ भी कर लें। लेट्स से मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया इसके लिए। ठीक है, तो फिर मेरी स्पीड्स क्या होंगी? ए की स्पीड होगी 0. बी की स्पीड होगी 0.3 क्योंकि वो ऊपर को जा रहा है ना, 0.3। ए नीचे को आ रहा है, उसके हम क्या लेंगे? -4.7। ए का मास कितना था? 0.4 and 0.2, 0.4 kg and 0.2 kg। आफ्टर कोलिजन क्या होता है? दोनों पार्टिकल्स मर्ज हो जाते हैं। जब दोनों पार्टिकल्स मर्ज हो जाते हैं तो लेट्स से इट बिकम्स ऑब्जेक्ट सी, और इस ऑब्जेक्ट सी का मास कितना होगा? उन दोनों का सम, दैट्स 0.6 kg। इसकी स्पीड क्या है, ये हमें फिगर आउट करनी है। All we have to do now is apply conservation momentum. Momentum before collision, that is equal to momentum after collision. Input values, and that gives you 0.4 into -4.7 plus 0.2 into 3. That's the momentum before collision. What about the momentum after collision? 0.6 into VC.
Let's figure out the value of VC from this and see what that turns out to be. 0.4 into 4.7 minus 1 is 1 plus 0.6 divided by 0.6, and that is giving me just check that again, 0.4 into 0.47 and 4 into 4.7 into minus 1. Okay, plus 0.2 into 0.3 whole divided by 0.6. And that turns out to be negative 3.033 for me. This is the velocity of C that I'm getting. Negative का मतलब सिर्फ ये है क्योंकि हमने ऊपर वाली पॉजिटिव लिया तो कोलिजन के बाद ये क्या करेगा, पार्टिकल नीचे को मूव करेगा. उसने क्या पूछा था, उसने सिर्फ पूछा था स्पीड ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल. स्पीड का तो कोई साइन नहीं होता, तो अब यहाँ पे लिख देंगे स्पीड ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल देयरफॉर इज गोइंग टू बी 3.033 meters per second. This is what we end up getting from this. Okay, that was pretty complicated. अगर आप वो वाला पेपर देखेंगे जो आप मुझे बता रहे थे अभी, उसमें भी you had something similar. Kinematics with momentum आ गया था and became pretty complicated. So यहाँ पे you could reduce your working slightly because यहाँ पे मैंने एक चीज फाइंड की है 0.2 meters का उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया before and after. It turns out we did not have to use that क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी यहाँ पे. दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन. उसने टाइम आपको बता दिया था कोलिजन का, तो क्योंकि टाइम आपको पता था तो even if you did not find this distance, ये जो मैंने डिस्टेंस फाइंड किया ये वाला पार्ट और ये फिर 0.2 इवैल्यूएट किया, इसके बगैर भी हम ये कर सकते थे बिकॉज वी डिड नॉट रियली हैव टू यूज दैट. उसने टाइम ऑफ कोलिजन बता दिया था तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपको नहीं यूज करना पड़ा. बट अगर टाइम इसने नहीं दिया होता तो फिर आप ये डिस्टेंस को यूज कर सकते थे टू फाइंड दैट पॉइंट ऑफ कोलिजन, राइट. लेकिन उसने एक एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दिया जिससे हमारी वर्किंग थोड़ी सी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये वाला पार्ट जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इट वाज नॉट रियली यूज्ड एनीवेयर. Okay, I hope that makes sense. You can have a look at this again to make sure you understand what we have done. Each step